Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. محترم کوآرڈینیٹرس صاحبان اور صاحبات اور قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسائنمنٹ 2 پر ڈسکشن کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. First of all, I would like to present an overview in this language because in the afternoon session I have spoken in detail about the assignment 2 and its overview. See, we have decided to study the seerah of Prophet Ibrahim alayhi salam in view of the Quran Kareem, and we have taken 7 points. For that, we think that these 7 points will cover the entire life of Prophet Ibrahim alayhi salam. And the sole motive of this selection is that the Prophet Ibrahim alayhi salam has been regarded as an ideal for the whole ummah of Prophet Muhammad, peace be upon him. So how to understand this particular aspect described in the Quran very explicitly, that Prophet Ibrahim alayhi salam and his companions are ideal for you, for everyone. So we are trying to get this idea, or we are trying to understand this particular concept described in the Quran through 2 important things. One is that we are focusing on the intellectual aspect of the Quran Kareem, which deals with Prophet Ibrahim alayhi salam and his way of contemplation and his faith and his sacrifices in the way of Allah, etc., etc. So the second thing is that we want to adopt, we want to have the habits and the qualities that have been described in the Quran, and we are trying our best to see what practical ways we can adopt to get those qualities in ourselves. So intellectual development as well as the moral development, enlightenment and personal growth. So these are the 2 important things that we would like to have through this Quranic course. First week we have crossed already, and alhamdulillah we have finished with our assignment. And the second week has a very specific topic, that is we are studying the Quranic attributes, Quranic qualities of Prophet Ibrahim alayhi salam. For this to specify, we have given you 5 different surahs and the selected ayah. I think there are 11 verses. So through those 11 verses, you can understand the main points regarding the qualities of Prophet Ibrahim alayhi salam. So we have given you a table wherein you can fill all those things. So you can understand how many qualities of Prophet Ibrahim alayhi salam have been explained in those verses. So the first thing you have to do is to go through those verses carefully, recite them correctly with good Bukhari and all. Go through their commentaries and respective books. So this is the first step that you have to cross very cautiously and very carefully. Without reading and without contemplation, if you go ahead and try to attempt the question answers or case study, that will not be that impressive and that will not be beneficial to you. So you have to ponder a lot on those verses, read the commentaries and go through relevant books. Spend 1 or 2 days on that. After understanding that one, make notes of those things that you have already understood. 1, 2, 3, 4, whatever points you get, just note it down and try to attempt the first activity, the question and answers. Understand questions first and see what you have already read. If not, then again go through the verses or go through the commentaries and try to gather as much information as you can. Then try to write down the answer. So we have framed questions in a way that these questions will inculcate in you 3 important things. One is that you can develop your intellectual ability. You can have very clear idea about Prophet Ibrahim alayhi salam and his the Quranic attributes. Second thing, you can apply those verses on your conditions, be it your individual condition or your society's condition or your country's condition. You can apply those verses on the prevailing condition. Second thing you can learn. And third thing, you can implement on yourself, on your family, or whatever possible for you. You can go for implementation. So these are the 3 important things that you can learn from those verses and those activities. Number 1, question and answers. And again, you are going to the second one,
that you have already done in the first assignment, that is case study. So question and answer is this, that you should read first and then try to attempt the questions and write down answer as you have been guided there. As for the case study is concerned, we have taken the same thing. We have advanced that topic of Quranic characters of Prophet Ibrahim alayhi salam. But here we have given you those verses of Surah An-Najm which have been described or which have been highlighted as the noble values or the moral values which were present in the books of Ibrahim alayhi salam. Sahifa Ibrahim. So from that it has been mentioned in the Quran, taken from those books and mentioned in the Quran, and it is said explicitly at the beginning that the verses you are reading from 38, it has been said that these are the values which were already there in the Sahifa of Suhuf of Ibrahim and Musa alayhi salam. So go through those verses and try to understand the concept. Moral values have been described over there. Just go through those verses and go through the keywords and try to come up with your own question, and you know how to carry out the case study. So for case study, you have that particular portion from Surah An-Najm. Third activity is video speech, and fourth activity is your children's activities. Third activity has got an option that you can either opt for video speech or article writing. So for both, you need to take topic or subject from the main theme of the week. That is the Quranic attributes of Prophet Ibrahim alayhi salam. You take the whole, or you take any part of that one, any particular character of Ibrahim alayhi salam you can take and make a video speech or write an article. As for children's activities are concerned, you are aware that we are suggesting you to carry out activities for your children aged between 5 to 10 in view of the topic given to you. So you know how to answer your questions, you know how to conduct your case study, you know how to deliver a speech or write an article. So through these process, we expect that you might have gained a lot of knowledge. So make use of that knowledge and inspire your children to be with you along with your studies and along with your way of contemplation. So ये कुरान मजीद की जो आयतें दी गई हैं आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसमें हसना से मुताल्लिक़, उसका ओवरव्यू है कि जिसमें हमने अखलाकियात को मुंतखब किया है और इसके लिए 5 मुंतखब सूरतों से 11 आयतें दी गई। 11 आयतों पर आप गौर फरमाएं और उनसे मुताल्लिक़ जो तफासिर हैं उनका मुताला करें, नोट्स मेंटेन करें। फिर उसके बाद में आप देखें कि कौन कौन से अखलाकी पहलू उन आयतों में बयान किए गए। एक जदवल दिया गया आपको, उस जदवल में आप वो तमाम चीजें नोट कर लें ताकि आपको रेफरेंस के लिए आसानी। क्वेश्चन आंसर्स को आप जाएं और देखें कि किस तरह के सवालात हैं और किस तरह के आपको जवाब देने हैं। सवालात के जवाब देने के लिए आपने जो स्टडी की है उससे हेल्प लें, आप वो नोट से हेल्प लें। मजीद जरूरत हो तो मजीद मुताला करें और अच्छी तरह से आप आंसर करें। क्वेश्चन आंसर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपको पढ़कर ही जवाब देना पड़ेगा, खुद से जवाब नहीं दे सकते। खुद से अगर जवाब देंगे तो मालूम हो जाएगा कि आपने खुद से जवाब दिया, मुताला करके आप जवाब देंगे तो मालूम होगा कि आपने मुताला करके जवाब दिया। तो क्वेश्चन आंसर इस तरह से फ्रेम किए गए हैं कि ये आपकी फिक्र को पुख्ता करेंगे इंशाअल्लाह, ये आपको अमल की तरगीब दिलाएंगे और ये आपको मोटिवेट करेंगे कि आप अपने हालात पर इनका इंतबाह करें, इनको अप्लाई करें। फिर केस स्टडी के लिए हमने सूरह नजम की आयतों को मुंतखब किया है और उन आयतों में अल्लाह तबारक तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में जो चीज़ें थी अखलाकी पहलू उनको बयान किया है। तो हमने वीक के जो टॉपिक्स मुंतखब किए हैं उन्हीं की मुनासिबत से सूरह नजम की आयतें मुंतखब की हैं, उनके तहत आपको केस स्टडी कंडक्ट करनी है। उन आयतों का खूब मुताला करें, आप गहराई के साथ मुताला करें, तफासिर पढ़ें और फिर जो कीवर्ड्स दिए गए हैं अहम अल्फाज उन पर गौर करें और एक अच्छा तहकीकी नोयत का सवाल वज़ा करें और फिर उसका जवाब आप तहरीर करें। फिर वीडियो स्पीच है, तकरीर है और बच्चों की सरगर्मियाँ, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको जो वीक का थीम है उसके तहत अंजाम देते हैं। आप माशाल्लाह काफ़ी फेमिलराइज हुए हैं इस कोर्स से और तरीक़े सवालात और जवाबात से और केस स्टडी वगैरह से, तो मैं ज़्यादा अभी गुफ्तगू नहीं करूँगा, आपके लिए ये ओपन रहेगा अभी सेशन कि आप सवालात करें। तो सवालात के सिलसिले में गुजारिश ये है कि पहले आप अपना जो फर्स्ट असाइनमेंट का एक्सपीरियंस है उसको बयान करें कि कैसे आपने अटेम्प्ट किया था और क्या क्या आपको दुश्वारियाँ पेश आई, कहाँ आप अच्छे रहे, कहाँ हेल्प की आपको जरूरत महसूस हुई वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में हम आएंगे सेकंड असाइनमेंट पर।
पहले सवालात पर हम गुफ्तगू करेंगे, फिर उसके बाद में केस स्टडी पर, फिर उसके बाद में आगे की एक्टिविटीज पर। तो इस तरह से अगर हम सिस्टमेटिक जाएं तो इंशाल्लाह जो मुतय्यन वक्त है उस पर हमारा अच्छा गुफ्तगू हो सकती है, अच्छा डिस्कशन हो सकता है, तो इंशाल्लाह वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना मुबारक करे, आपका कोर्स ज्वाइन करना मुबारक करे, आपका पढ़ना लिखना तदब्बुर करना मुबारक करे, और इसके जरिए से अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को, आपकी फैमिलीज की ज़िंदगियों को बदले। मेरे साथ अभी बहुत से कोऑर्डिनेटर्स जमा हैं माशाल्लाह आज के इस नशिस्त में, वो भी आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हम सब हैं यहाँ पर, आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप अपनी गुफ्तगू पेश करें। अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।